हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोर ट्यूशन सेंटर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ऑन योर स्क्रीन क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। देखिए स्टेटमेंट दिया, हमें ट्रू और फॉल्स बताना। सिंपल, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। पहले समझते हैं फिर ट्रू एंड फॉल्स बताएंगे। देखिए सिंगल पॉइंट है, वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। सिंगल पॉइंट है, इससे लाइन बनाते हैं, एक लाइन ये बन गई। क्या और लाइन बन सकती है इससे? यस, वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स थ्रू ए सिंगल पॉइंट। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सेकेंड, देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। हमारे पास दो अलग अलग पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट लेट से ये है। वी हैव टू पॉइंट्स। इन पॉइंट से कितनी लाइंस बन सकती हैं? देखिए एक लाइन में ड्रॉ करता हूं, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए ये लाइन मैंने बना दिया। ओके, एक लाइन तो बन गया। अब देखते हैं बाकी है कि नहीं है, ट्राई करते हैं। मैंने इसको मिलाया और एक लाइन यहां से ड्रॉ करना स्टार्ट किया, तो सिंपल सी बात है, वो लाइन यहां से पास नहीं करेगी। यहां से मैंने ट्राई किया बनाने के लिए, तो वो लाइन यहां पास नहीं करेगी। मींस टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से सिर्फ एक यूनिक लाइन होगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस नहीं होंगी। सो दिस वन इज आल्सो फॉल्स। थर्ड, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड्स। ये लाइन है, ये टर्मिनेटेड लाइन था। उसने बोला कि लाइन जब है तो ये लाइन यहां कंप्लीट नहीं होती। दिस कैन बी प्रोड्यूस्ड इन दिस डायरेक्शन एंड इन दिस डायरेक्शन इनफाइनाइटली। So this is true according to postulate, according to second postulate of Euclids. Got it? So this is true. Next, circles are equal, their radii are equal. Take two circle, first and second. Radius R1, इसका radius R2. ये दो सर्कल्स हैं। इफ द सर्कल्स आर इक्वल दे मस्ट कोइंसाइड। ओके, पुट दिस सर्कल ओवर दिस सर्कल। यू कैन सी दैट सेकंड सर्कल इज कंप्लीटली कोइंसाइडिंग विद द फर्स्ट सर्कल। सो R1 इज इक्वल टू R2. इफ टू थिंग्स आर कोइंसाइडिंग दे मस्ट बी इक्वल अकॉर्डिंग टू द एक्सियम्स ऑफ यूक्लिड्स। वी हैव थ्री लाइन्स AB, PQ and XY. It says AB is equal to PQ and PQ is equal to XY, means AB is also equal to PQ and XY is also equal to PQ. If two things are equal to the same thing, then these things are equal to each other. So AB is equal to XY. Okay, question number 2. Give definition for each of the following: parallel lines, perpendicular lines, line segment, radius of circle and square. देखिए अगर आप बेसिक से कर रहे हैं ज्योमेट्री बिल्कुल, तो सिंपल सी बात है, आपको सबसे पहले बेसिक्स नॉलेज होनी चाहिए। पैरेलल लाइन से पहले आपको लाइन का पता होना चाहिए। परपेंडिकुलर लाइंस कहाँ इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट का पता होना चाहिए। स्क्वायर है तो मीन्स प्लेन का पता होना चाहिए। प्लेन मीन्स सरफेस। मीन्स दे आर थ्री टर्म्स विच नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, एंड द टर्म्स आर पॉइंट, बेसिक, सेकेंड line, and third is plane. Point dimensionless है, ना लेंथ होती है ना ब्रेड्थ होती है। लाइन सिंगल डायमेंशन होती है, एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में या जेड एक्सिस में, मीन्स लेंथ, हाइट और ब्रेड्थ। एंड प्लेन इज टू डायमेंशनल, टू डायमेंशनल फिगर। अगर मैं क्यूब की बात करूं तो थ्री डायमेंशनल हो जाता है। सो डायमेंशनलेस, वन डायमेंशनल एंड टू डायमेंशनल। इनको डिफाइन करते हैं। पॉइंट क्या होता है? देखिए, ए पॉइंट इज ए डॉट ड्रॉन ऑन ए प्लेन सरफेस एंड इज डायमेंशनलेस। इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। लाइन, ए लाइन इज कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन एंड हैज ओनली लेंथ नॉट breadth, means have only one dimension. And plane, a plane is a flat surface on which geometric figures are drawn like rectangle, triangle, square, rhombus.
these type of figures can be drawn on the plane. Okay, now we will define parallel lines. The two lines which never meet with each other or never intersect are called parallel lines. The perpendicular distance between parallel lines is always same. Second, perpendicular lines. When the angle between two lines is 90 degree, then the lines are called perpendicular to each other. Third, line segment. A fixed portion of a line having definite length is called line segment. Radius of a circle, the distance of circumference from the center is called radius of circle. Last, square. A square is a plane figure, or a quadrilateral means having four sides and all the four sides are equal and each angle is 90 degree. This type of figure is called square. Got it? Okay. In case of any doubt, comment in the section below. Thanks for watching. Have a nice day.